Michel Foucault. Structuralists studied systems. Derrida studied the instability of systems. Foucault asks, why are we studying systems without asking who created them? Michel Foucault gave a very important concept of discourse. He says, we shall call discourse a group of statements insofar as they belong to the same discursive formation. To simplify, discourse is not ordinary conversation. It is a system that determines what can be said, who can speak, what counts as truth, what counts as falsehood. Discourse is a socially organized system of knowledge that determines what can be said, who can speak, and what counts as truth within a particular field. Take the example of medicine. Suppose someone says, I have a disease. Who can officially confirm it? Usually doctors, laboratories, and hospitals. Not everyone. Why? Because medicine is a discourse. It authorizes certain speakers only. सब नहीं कह सकते कि तुम्हें ये बीमारी है. ये कहने का हक सिर्फ एक डॉक्टर रखता है. तो ये मेडिसिन जो फील्ड हो गया, ये एक डिस्कोर्स है. डिस्कोर्स हेल्प्स क्रिएट सोशल रियलिटी. मतलब एग्जाम्पल लेते हैं क्रिमिनल का. हु इज अ क्रिमिनल? इट सीम्स ऑब्वियस, बट फूको आस्क्स हु डिसाइड्स. द आंसर इन्वॉल्व्स लॉज, कोर्ट्स, पुलिस, prisons. All these together create a discourse. Only they decide who is a criminal. Another important concept given by Foucault is power and knowledge. Power and knowledge directly imply one another. Meaning, knowledge creates power, power creates knowledge. जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नो what you watch, what you click, what you like. That knowledge allows them to influence what you see next. That's how knowledge creates power. According to Foucault, knowledge is never neutral. The ability to define, classify, examine, and regulate people produces power, while institutions with power also produce accepted forms of knowledge. Therefore, power and knowledge are mutually dependent. Discipline. Foucault says, modern institutions train us. They teach us how to sit, how to behave, how to speak, how to obey schedule. The body becomes a useful force only if it is both a productive body and a subjected body. A productive body is one that can work efficiently and contribute to society. The word subjected means made subject to authority or brought under discipline and control. बहुत इम्पोर्टेंट बात कह गई फूको यहाँ पर. वो कह रहे हैं इंसानों को कैसे देखा जाता है, एक बॉडी के रूप में देखा जाता है. और कैसी बॉडी? जो कि प्रोडक्टिव हो, जो किसी काम के लायक हो, और साथ साथ में कैसी बॉडी हो? सब्जेक्टेड बॉडी हो. मतलब जिस पर हम हुक्म चला सकें, जिसको हम ऑर्डर दे सकें, जो हमारी डिसिप्लिन और कंट्रोल के अंडर रहे. जैसे कि ए सोल्जर मस्ट फाइट इफेक्टिवली, that means productive. Obey commands without hesitation, that's subjective. Without discipline, the soldier is less useful. Another important concept of panopticism. Usually in NET exam they ask questions, especially
about Jeremy Bentham. Let's see. Foucault uses Jeremy Bentham's panopticon prison design. So panopticon is a design of a prison made by Jeremy Bentham. How does it look like? Prisoners occupy individual cells and there is a central tower observes them. Prisoners never know when they are being watched. The result? Eventually prisoners discipline themselves. This is the key idea. External surveillance becomes internal self-surveillance. एक बीच में बड़ा सा लंबा सा टावर है, उसके आसपास बहुत सारे इंडिविजुअल सेल्स हैं जिसमें कैदी हैं, और उन कैदियों को नहीं पता कि टावर के अंदर गार्ड है या नहीं। उनको ऐसे लगता है कि सारा दिन गार्ड उन पे नज़र रखे हुए हैं, तो जिसकी वजह से वो डिसिप्लिन में रहते हैं। और गार्ड ना भी हो वो फिर भी, क्योंकि उन्हें नहीं पता, तो फिर भी वो डिसिप्लिन में रहते हैं क्योंकि वो सेल्फ सर्विलियंस करने लग गए हैं, खुद को ही सर्विलियंस में रखने लग गए हैं, एक्सटर्नल सर्विलियंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरीके से उनको डिसिप्लिन किया जाता है, नॉप्टिसिज्म। थैंक यू।